Hey everyone, this is Shri and welcome to some Unbox. तो आज हमारे साथ है MSI की तरफ से आने वाला एक मदरबोर्ड. सो लेट्स डिग इन. ओके, सो दिस इज द बॉक्स जिसमें हमारा मदरबोर्ड पैक्ड है. सो गेटिंग अराउंड द बॉक्स, यहाँ पर कुछ की फीचर्स और एक QR कोड प्रिंटेड है जिसे स्कैन करने से वी कैन गेट द यूजर मैनुअल इन अ PDF फॉर्म. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट विद द अनबॉक्सिंग. ओपनिंग ऑफ द बॉक्स वी फाइंड आवर मदरबोर्ड जो कि एक एंटी स्टैटिक कवर में पैक्ड है बिकॉज मदरबोर्ड्स आर हाईली सेंसिटिव टू द स्टैटिक चार्ज. नेक्स्ट, इसके लोअर सेक्शन में वी गेट 2 SATA केबल्स, एक IO शील्ड, एक कुछ पेपर वर्क और एक ड्राइवर इंस्टॉलेशन CD. अब चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ. तो इन द प्रोसेसर सेक्शन इट हैज एन AM4 CPU सॉकेट जो सपोर्ट करता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जेन AMD Ryzen CPUs, फर्स्ट एंड सेकंड जेन Ryzen APUs और Athlon APUs को. इसके जो 4 RAM स्लॉट्स है वो सपोर्ट करते हैं DDR4 RAM sticks up to 3400 MHz. Now into the graphics section, हमें एक PCI 3.0/16 स्लॉट पोर्ट देखने को मिलता है. अब बढ़ते स्टोरेज की तरफ. सो इट कैन हैंडल वन M.2 इंटरफेस एंड 4 SATA ports. The image flashing over the screen shows some detailed info. तो अगर आपको पोर्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक. नाउ टॉकिंग अबाउट द IO पोर्ट्स, तो पहले आ जाता है हमारा कीबोर्ड और माउस पोर्ट विद 2 USB 2.0 पोर्ट्स एट द बॉटम. देन एक VGA पोर्ट, DVI-D पोर्ट फॉलोड बाय 2 USB 2.0 पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट और 4 USB 3.0 पोर्ट्स with an Ethernet port, और lastly the audio interface. Now talking about the pricing, तो ये मदरबोर्ड की प्राइस रेंज करती है in between 7200 to 7600 INR. So if you are interested in buying the motherboard, the link of it along with its other models are given below in the description, so go check it out. Overall, considering the price range, हमें इस मदरबोर्ड में मिड सेक्शन गेमिंग के लिए अराउंड सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि 4 RAM स्लॉट्स, lots of USB 3.0 ports, a wide support for the AMD processors, एक M.2 SSD वाला slot and many more, which makes it one of the best motherboards in the budget section. Okay, that's it for today guys. Hope you liked the video. If you do so, hit the like button and make sure to subscribe to my channel and press the bell icon to get notified when I release a new video. If you have any better suggestions, comment down below. Until then, stay techy.